Morning, people. Welcome back. In the last lecture, we had started with chapter 2, electrostatic potential and capacitance. Let me briefly brush up what we did last time. First thing, we saw that in order to bring a charge Q from infinity to a given point, we have to do work. The external agency has to do work, and the work is stored as electrostatic potential energy. So the first idea, we are brushing up the facts. The work done is equal to electrostatic potential energy, let us say at point P, is minus integral from infinity to P. We are bringing the charge Q from infinity to a point P, and it is given as Fe bar dot dr bar. We have also understood that Fe bar is what? QE bar dot dr bar. The second idea, this was the first one. The second idea was defining electrostatic potential. This work done to bring charge Q is called electrostatic potential energy. Work done to bring unit positive charge. This is work done to bring unit positive charge from infinity to given point and is called electrostatic potential. And it was denoted as V. I hope you remember. So V at P is minus integral from infinity to P. Now Q becomes 1. So this becomes E bar dot dr bar. Very lovely equations out here. The SI unit of V is potential. So SI unit of potential is joule per coulomb, or we also called it volt. Alejandro Volta gave us the unit, so it is called volt. Also, a couple of important points. We saw that work done is also equal to change in potential or change in potential energy. So we saw that Vp minus Vr was Up minus Ur the whole by Q. This was how we defined electrostatic potential. Thirdly, we saw that potential difference between 2 points Q and P is VQ minus VP is minus integral from P to Q E bar dot dr bar. We called it the PP formula. Alright, we called it the PP formula. No pun intended, but this was the PP formula. This is P, and this was how the cookie crumbled. And finally, the last topic that we did last time was electric potential at a point due to a point charge, due to a single charge. And we saw a very lovely equation take place that suppose I have a charge Q and this is point P, let us say at a distance R. What is the electric potential at P? Beautiful equation. You remember electric field E is kq by r square. Electric potential V is kq by r. So electric field was inversely proportional to the square of the distance. Potential was inversely proportional to the distance itself. So this is what we did last time. This is going to be the starting point of today's lecture. Electric potential at a point is kq by r. This is where I'm going to start my lecture today. I am going to find the electric potential at a point due to a dipole. Well, from chapter 1, I hope you remember the dipole. A system of two equal and opposite charges separated by a finite distance, that was called a dipole. So the topic's name is electric potential at a point due to a dipole. So two equal and opposite charges, ladies and gentlemen. Let me have this system
I have drawn a big dipole. Let me make it small. Yeah, this is big enough. This is plus q. This is minus q. This is the midpoint of the dipole. I hope you remember the distance between the two charges is 2a. So this is a. This is also a. And what do we need? Let us say this is a point P. At this point, we need to find the electric potential due to both charges of the dipole. Let me draw lines, distance lines. This is R1 and this beautiful line is R2. And let me call this, oh lovely, this is R. Now, this angle, let me call it as theta. Now, first things first, how many charges are there? 2. And both these charges will contribute to the potential at point P. So, the net electric potential at point P is, well, if I would have asked you electric field, you would have given me superposition principle saying E bar is E1 bar plus E2 bar. Here too, the superposition principle works, but potential is a scalar, so there is no bar. So simply V at P is V due to plus Q and plus V due to minus Q. As simple as it looks. Okay, how much far is plus Q from point P, or how far is point P from plus Q? Isn't it R1? So my equation becomes Vp is KQ by R1. And how much is V due to minus Q? Remember, this is a negative charge. So plus K minus Q by, how far is point P from minus Q? R2. So to cut a long story short, KQ by R1 minus KQ by R2. I'll take KQ common. 1 upon R1. It seems we are stuck here. We are in some sort of a jam. Because we don't know R1, we don't know R2. Two different things. How are we going to do that? Vectors will come to our rescue. Now, from the figure, if you are looking closely, can you see R and A? This much is A and this much is R. They are the two sides of a triangle. The third side of that triangle is R2, or if you go up, it is R1. If you are looking at R1, R1 is one side, A is another, and R is the other side. We want to relate these three. So, geometry, Pythagoras theorem, and a mixture of Pythagoras theorem gives us this equation. R1 square, we want R1. बाकी दो साइड कौन सी है, R और A, so is equal to R square plus A square. Do you notice R is the bigger side, R1 is the smaller side, so minus 2AR cos theta. If theta would have been 90, cos 90 would have been 0, and you would have gotten R1 square is R square plus A square, which would have been Pythagoras theorem. So, but we don't want R1 square, we want 1 by R1. So let us take root. So take root. R1 is, do I actually need R1 square or R1? R1. So R1 square, I'm going to take R square common. Bracket 1 minus 2AR cos theta by R square plus, now as A is much smaller than R, so A square by R square is much smaller than 1, so we neglect it. And after neglecting it, what do we have? R1 square is R square bracket. We have neglected A square by R square because it is very small. So 1 minus 2A, now 1 R goes away. So 2A cos theta by R. I'm sure you are looking. I have taken this. From this equation, I have taken R square common. In the bracket, this is 1 minus, I have taken this up front, divided this by R square plus A square by R square. Now A was very smaller than R, so A square by R square much lesser than 1. So we neglected it. We cancelled 1 R.
and we are left with r1 square is r square bracket 1 minus 2a cos theta by r. So how much is r1? Isn't it r? I'm going to take square root 1 minus 2a cos theta by r, the whole raised to half. Are you looking? So I took the square root of the entire term. So I landed with r1 square ka root is r1, r square ka root is r, and is pure ka raised to half. Now how am I going to work this out? Binomial theorem, remember people? Now I'm going to take reciprocal. So r1 becomes 1 by r1. I'm going to reciprocate the whole thing. And when this whole thing goes down and it comes up again, this becomes 1 minus 2a cos theta by r, the whole raised to minus half. And so, using binomial theorem, one by r1 is 1 by r, bracket, you multiply this here, minus half into, आपने देखा मैंने क्या किया? This we did in gravitation also. We take this minus half and we multiply it here, as I have done, into 2a cos theta by r. So the 2 goes away, and what are we left with? We are left, I'll keep this for now. Let me take this off. I'm sure you'll remember. So 2 goes away and minus becomes plus. So 1 by r1 is 1 by r bracket and 1 plus a cos theta by r. This is a very lovely equation. This, let's call it equation 2. Similarly, I've used it only for r1. I can do it for r2 also. Same, r2 square. Now this is all going to be plus. Because can you see? This is the bigger side r2. Plus 2ar cos theta. If you might have noticed, r1 was smaller than r. That is why we had a minus. But r2 is bigger than r. So we have the plus. So similarly, you can do this. R2 square. You took this in the bracket. 1 plus 2ar cos theta. I'm just moving on. I'm doing the same thing that I've done here. I'm neglecting a square by r square. And finally, cutting a long story short, that is what we usually do. So neglect this. So this becomes r square bracket 1 plus 2a cos theta by r, and take root. So 1 by r2. You get this only. The only thing is here it's minus. 1 minus a. You can do this on your own also. They have not devoted a lot of time to this in the textbook, but I think I'll devote this. So finally, I think it's time to put 2 and 3 in 1. Sir, where is 1? Okay, 1 is long gone, but is still fresh with us. This was 1. So in place of 1 by r1, I'm going to put 2. And in place of 1 by r2, I'm going to put 3. And let's see what am I going to get. 1 by r is common both ways. So here it is. Bracket 1 plus a cos theta by r minus 1 minus a cos theta by r. Opener of brackets, destroyer of equations. 1 minus 1, 0. A cos theta by r minus a cos theta by r. That's a cos theta by r plus a cos theta by r. 2a cos theta by r. My God, how many r's? We got 2 r's. So, finally what do we get here? After a longish track, we get k, q, 2a cos theta, and r into r is r square. I hope you still remember q into 2a was p, dipole moment. So,
So finally, I'm going to write something in blue. Q into 2A, I'm going to convert it to P. And what am I going to get? V at P, let us say, is Kp cos theta by R square. One lovely piece of equation here. Kp cos theta by R square. Supposing if theta is 0, that means point is on the axis, on this line. How much is cos 0? 1. So V on the axis is Kp by R square. And if theta is 90, meaning this is the line, equator, point lies on the equator of the dipole. What is it that we are going to get here? What are we going to get? Pleasure, that is what we are going to get. But apart from that, if theta is 90, that means point is on the equator. Cos 90 is how much, gentlemen? 0. So V on the equator is going to be 0. You can go a couple of steps further also. Well, it is not required, but in any case, well, I hope you remember the P bar is directed from minus Q to plus Q. We'll put that in red. This is P bar. So, also, I hope you remember AB cos theta is A bar dot B bar. So, this is called scalar product. So, similarly, can I write P cos theta as P into 1 into cos theta? P is the scalar of P bar and 1 is the value of R cap. So, P cos theta can be written as P bar dot R cap, and thus our equation number 4 becomes, in a very simple, beautiful way, it becomes Vp, which was Kp cos theta by R square some time back. P cos theta has been written as P bar dot R cap. So K P bar dot R cap the whole over R square. Well, this is just a way to represent, not really effective in giving us answers. What is more effective in giving us answers is V is equal to Kp cos theta by R square. As a small note, I usually mention this. In chapter 1, we dealt with electric field due to a dipole. And in that, we saw that electric field on the axis is 2 Kp by R cube. Electric field on the equator was minus Kp by R cube. So, on the equator, on the axis, it is proportional to 1 by R cube. So, electric field proportional to 1 by R cube, whereas potential, can you see, is proportional to 1 by R square. This is usually used in your equations, in your competitive exams, or maybe they might give you a curve and they might ask you, which is this curve? Is this an electric field curve or a potential curve? So if it is proportional to 1 by R square, it is a potential curve. If it is proportional to 1 by R cube, it is a field curve. So this is the electric potential due to a dipole. Let's go on. I would have, well, actually, we are looking at discrete charge distribution. If there are number of charges, let us say Q1, Q2, Q3, Qn, and they ask you to find the net electric field, then what is your net electric field? Isn't it E bar is E1 bar plus E2 bar plus plus En bar? Well, on very similar lines, you will say, sir, this is superposition principle. I know, but I am not concerned with that. What I am concerned with is, let us say I have got many charges. Let us say I have got Q1, I got Q2, I got Q3, and I got Q4. Let us say there is a Q5 also. All these charges are at different positions. Let us say Q1 is at distance R1P from point P. Q2 is at R2P from point P. Q4, where is Q3P? This was Q3.
R3p. Similarly, this is R4p, and this. सर करना क्या है? अच्छा, we need to find mission template कहते हैं इसको. To find total potential, total electric potential at P due to Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. ओके, तो पहले एक एक का फाइंड करते हैं. सबसे पहले ड्यू टू Q1, भाई पोटेंशियल किसी भी चार्ज की वजह से कितना होता है? V is KQ by R. So V1 is KQ1 by how far is point P from Q1? Isn't it R1P? Similarly, due to Q2, how much will be the potential? V2, same equation, no change. KQ2 by कितना दूर है Q2 from P? R2P. और ऐसे चलता जाता है. So finally net potential at P, सारे चार्जेस का ले लेता हूं. V due to Q1 plus V due to Q2 plus V due to Q3 plus V due to Q4 plus V due to Q5. V1 पता ही है, KQ1 by R1P. V2 KQ2 by R2P. V3 आप बताओ जी. हाँ सुन लिया मैंने. KQ3 by R3P. And so on it goes. KQ4 by R4P. दिखाना यही चाह रहा हूं कि दिस इज एज सिंपल के समेशन फ्रॉम I इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक QI over RIP. RIP is not rest in peace. It is only R distance of point P from charge I. तो बहुत ही बढ़िया इक्वेशन. इसमें कोई वेक्टर फॉर्म नहीं है. क्यों कोई वेक्टर फॉर्म नहीं है? Why can't I write VP bar is V1P bar, V1 bar plus V2 bar? Now you will tell me, sir, क्या आप भी भूल जाते हो? अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, पोटेंशियल स्केलर है. वर्क डन स्केलर होता है ना, तो पोटेंशियल स्केलर है. तो यू कैन सिंपली एड इट लाइक 1 + 2 is 3 and 3 + 4 is 7. इसमें कोई चेन डायरेक्शन का कोई है ही नहीं. पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव है. सो दिस इज डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. हैव अ लुक. आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में. Okay, let's get back to business. New topic. Electric potentials at points due to a spherically charged shell. Charged spherical shell, not spherically charged shell. Charged spherical shell. ये हमारे पास पानीपुरी है. पानीपुरी means spherical shell. Radius is बड़ा R and there is charge Q entirely distributed uniformly on the surface. We need to find the potential at points inside and outside. Now, you remember chapter 1, this was the last topic we did. What was the electric field at any point inside the shell? 0. E inside was 0. And as a result, now since here it is also 0, here it is also 0, will there be any work done, will there be any change in work in bringing the point? You bring it from infinity to here or you bring it from infinity to here? बात तो वही हुई. So let us say this is point P inside at a distance R. For point P at a point inside, on or inside the shell. So very important formula. These people remember this. I call it V in या on. चाहे point अंदर हो या ऊपर हो, it is KQ by radius of the shell. So what is the radius of the shell? You'll say, sir, R. Why don't we call it KQ by R? Because there can be two R's. This is also R, this is also R. तो कौन सा R होगा, कैसे पता चलेगा? So I call it KQ by radius.
whenever I am going to look at a shell, whenever I am going to look at the potentials in ya on, I am always going to use either radius or distance. So you can see this. V in or on is kq by radius, and if you want to write it as kq by bar, I don't have even a small problem. So for a point outside now, at a point outside, sir, where is the point? Why don't you show us the point? So let us say this is point S, and you can see it is outside the shell and a distance r from the center. Consider point S lying outside the shell at a distance small r from its center. So what will be the potential at that point? As simple. V outside is kq by, sir, radius, नहीं, distance. अब distance आ गया. Point अंदर हो या ऊपर radius आएगा, and बाहर हो तो it will be distance. So you can carefree write kq by distance, which is छोटा r. So I'm sure you now have seen the indispensability of kq by radius and kq by distance. R का कोई मतलब नहीं है, कौन सा R क्या राम जाने. So we always call it V in या on is kq by radius and V outside is kq by distance. Did I say kq by radius? I did kq by radius, and this is kq by distance. Utilizing this idea, we'll go forth. We'll look at a topic which is called equipotential surfaces. Just have a look. Now, what is an equipotential surface? Remember, I'm going to draw this diagram again. One day I will surely do that, because I have to explain some ideas regarding equipotential surfaces in this shell. So equi मतलब equal, potential मतलब potential, और surface का मतलब है surface. सर बहुत बढ़िया डेफिनेशन था, अभी तो आया ही नहीं, बट टॉपिक का नाम तो लिख लेते पहले, इक्विपोटेंशियल surfaces. So what is the equipotential surface? So a surface which contains points having the same value of electric potential is called equipotential surface. तो मस्त डेफिनेशन आ गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, कि एक ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है, सेम. सो अगर कोई सरफेस है मेरे पास, सपोज ये सरफेस है मेरे पास, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब पॉइंट पे सरफेस क्या हो, पोटेंशियल क्या होगा, सेम. तो दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. सर मिलेगी कैसे, बताते हैं. अच्छा, पहले कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर अ चार्ज क्यू. इस चार्ज क्यू की वजह से कोई भी आर डिस्टेंस पे द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू इज, वेल आई एम श्योर अब तक ये इक्वेशन डीएनए में पहुंच गया होगा. V is kq by r. So from this equation, do you agree V is inversely proportional to r? तो जितना r चेंज होगा उतना ही V चेंज होगा, और अगर r तुम्हारा कांस्टेंट है तो V भी कांस्टेंट है. तो फंडा क्या है सर, सपोज ये कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, ये इसका नाम है Q. ये पॉइंट है लेट अस से P, कितने डिस्टेंस पे, R. इसका पोटेंशियल क्या होगा, लेट अस से V. अब यहां से कोई और है, लेट अस कॉल इट P, इसको Q नाम देते हैं. इसका भी पोटेंशियल कितना है, V, सेम डिस्टेंस पे. यहाँ भी एक और पॉइंट है S, ये भी डिस्टेंस R पे है, इसका भी पोटेंशियल कितना है, V. तो ऐसे में करता जाऊं तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे मेरे को, और ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं तो डोंट यू थिंक कुछ इस प्रकार का सिचुएशन खड़ा होगा.
बाप रे, गंदा सिचुएशन खड़ा हो। ड्राइंग मेरा थोड़ा सा वीक रहने का, माइकल एंजेलो के पास ट्रेनिंग नहीं लिया मैं। ओ ब्यूटी, जो भी है ब्यूटी है। तो ये सारे पॉइंट्स, यू अग्री, मैं इस सर्कल को बनाया, मैंने रेडियस आर का सर्कल है ये। ऑल पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो क्या ये जो आर रेडियस का सर्कल बनाया है चार्ज क्यू के अराउंड सराउंडिंग, इजंट दिस मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस? ये सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है? सेम। सो मेरे लिए ये है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब कोई वहां देख रहा है, बोले सर ऐसे तो बहुत सारे बना सकते, तो बना ना, कौन मना कर रहा? तो ये तुम्हारा क्यों है, तो ऐसे तो बहुत सारे बना सकते हो। सर ये देखो, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये भी है, और ऐसे बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, which will all represent these are equipotential surfaces for a charge q। माइनस भी हो तो भी कोई फर्क नहीं, ये प्लस है, माइनस भी बना होता wouldn't have mattered, सेम टाइप के आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलते। नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड। अगर दो पॉइंट्स के बीच, अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो, सेम अगर है, तो इसका मतलब है इंफिनिटी से लाने में वर्क डन भी सेम हुआ होगा। तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, what is the potential difference between these two? Zero. If it is zero, what is the work done in taking any charge from this point to this point? Zero. So what is the work done in taking a charge between any two equipotential points? It is zero, zero. So just have a look. I'm going to rub this. I'm going to write some important points for an equipotential surface. So for an equipotential surface, the work done, we'll write in blue, it's an important point. The work done in taking a charge, taking any charge between 2 points on an surface is zero, since there is no potential difference। क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो। तो वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज जीरो। वर्क याद है? वर्क बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था। वर्क क्यू ई बार डॉट डी आर बार, एफ बार डॉट डी आर बार, वही क्यू ई बार डॉट डी आर बार, एंड दैट्स क्यू ई डी आर कॉस थीटा। बट हमको पता चला है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन कितना है महाराज? जीरो। इसका मतलब है क्यू ई डी आर कॉस थीटा क्या होना चाहिए? जीरो। अब इस इक्वेशन में चार चीजें हैं, क्यू है, ई है, डी आर है और कॉस थीटा। इफ यू लुक केयरफुली, इसका हर एक जीरो होना जरूरी नहीं है। इसमें से क्या क्या जीरो हो सकता है और क्या नहीं हो सकता वो बताओ। अब इफ यू आर लुकिंग क्लोजली एट दिस इक्वेशन, इफ यू सी, यू विल सी दैट क्यू कैन नॉट बी जीरो। तो चार्ज ही जीरो होगा तो लेके क्या जाए? सो बट ना क्यू जीरो हो सकता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, किसके खिलाफ वर्क कर रहे हो। तो ई भी नहीं है और डी आर भी जीरो नहीं है। अगर डी आर जीरो नहीं है तो दो पॉइंट सेम ही हो गए। सो एक ही मुजरिम बचता है, कौन है वो? कॉस थीटा। So obviously for an equipotential surface cos theta is zero, that is theta has to be 90 degree. So important, on an equipotential surface
ये थीटा किन दोनों के बीच इक्वेशन था जी? ई और डी आर. सो अगर ई और डी आर के बीच में एंगल है 90, सो ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर बार. बहुत ही इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास. सपोज ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से अलोंग द एक्स एक्सिस. कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस इस पे? इफ यू लुक क्लोजली, अगर मैं कोई ऐसा प्लेन बनाऊं, you know, if this is the electric field and this is the plane, if this plane is like this, if you say this plane is along the yz direction, तो do you agree कहीं से भी जाना, let us say A, B, C, D, aren't you always going perpendicular to the electric field? Tuck, 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 tuck. Electric field is always perpendicular. So E bar dot dr bar will always be 0. This is an equipotential surface. So if you are looking at it, this is the x-axis. Electric field is along the x-axis. If the plane is, if the surface you are choosing is in the yz plane, this is an equipotential surface. So if electric field is along x-axis, then a surface, any surface in the yz plane is an equipotential surface. बस हमेशा इतना याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड and displacement vector have to be perpendicular. If they are perpendicular, it is going to be an equipotential surface. So this is the idea of an equipotential surface, and we shall now go on. This is the most important statement, don't forget it ever. And we shall now go on and we shall look at a dipole also. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिंगल चार्ज का बताया था, मैं आपको डाइपोल का भी बता दूं. This is minus q, this is plus q. दोनों के एक ही जैसे हैं, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. सो डोंट गेट हैसल. ऐसा और इसका भी ऐसा, ऐसा और ऐसा, मिलन कहीं ना हो रहा, बराबर. इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी टाइप की है. अगर दोनों प्लस होंगे तो बाहर का भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें जुड़ जाएगा. So this is the idea about equipotential surfaces. Let us go on and let us now find out. वैसे तो हमको पता ही है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है, but let us now find out the relation between electric field and electric potential. That's well, इस टॉपिक पे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन पे, but in the competitive exams they might ask you a couple of questions regarding this idea. So it is a small theoretical topic which gives us an equation, which gives us a relation between electric field and electric potential. तो देखते हैं क्या है क्या नहीं. बहुत ही नॉर्मल स्टफ है. Stay with me. So relation between electric field and electric potential. ऐसा हमने लास्ट ईयर ग्रेविटेशन कर रहे थे. We saw a relation between gravitational field, that's gravitational intensity, and gravitational potential. Same idea, no difference. हम यहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसिडर कर रहे हैं. कंसिडर टू equipotential surfaces A and B. Let us say ये A है और ये B. This is surface A, this is surface B. इसका पोटेंशियल है let us say V and इसका पोटेंशियल आर्बिट्री ले रहा हूं V plus delta V. मैं जानता नहीं हूं कि सही है या गलत है, मैं सिर्फ इसको आर्बिट्री ले रहा हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा मुझे दिया हुआ है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, करना क्या है,
करना सिंपल है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से यहां लाना है, बी से ए तक लाना है। अच्छा, तो इन सरफेसेस को नाम दे दो पी और क्यू, नो प्रॉब्लम, हमारे पास बहुत लेटर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो हमको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन एंड मिशन टेम्पलेट, वी नीड टू ब्रिंग a unit positive charge from point B to point A। अच्छा, B से A तक डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एल है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एल है। भाई सिंपल है, कितना वर्क करना पड़ जाएगा, वर्क डन, भाई कितना है जी वर्क डन, इजंट इट, बी से लेकर ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई बार, और डिस्टेंस कितना, डेल्टा एल बार। एंड अगर तुमको सिर्फ वर्क चाहिए तो मॉड्यूलस ऑफ ई बार इनटू डेल्टा एल। एंड देखो शांति से, isn't the work done equal to potential difference, and potential difference is final part मतलब potential minus initial। फाइनल कितना है बाबा, is v of p minus v of q, v of p is v and v of q is, ओ वाह, तो खोल दो ना जरा, v माइनस v मर चुके हैं, वाह, तो मॉड ई बार इज माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा एल। बहुत ही सुंदर इक्वेशन, आपको समझ में आया मैंने क्या किया, इसका पोटेंशियल भी है, इसका v प्लस डेल्टा v है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, यहां से हम नीचे जा रहे हैं, यों जा रहे हैं b से a तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके। वर्क कितना करना पड़ जाएगा, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज q इनटू e, q कितना है 1, ये ले 1 रख दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड e मॉड e बार, एंड हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल डेल्टा l, सो मॉड e बार इनटू डेल्टा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस which is v final minus v initial। फाइनल है v माइनस इनिशियल है v प्लस डेल्टा v, सो आंसर आ गया माइनस डेल्टा v। बट अभी एक छोटा सा इशू है, डोंट यू अग्री कि हाई पोटेंशियल, सपोज मैंने इसको हाई पोटेंशियल कंसिडर किया ना, यहां पे पता चला कि ये हाई है और ये लो, हाई से लो जाने में हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ता है लो से हाई जाने में। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक लेके जाने में, यहां से यहां तक लेके जाने में आई विल हैव टू डू वर्क, बट यहां से यहां तक लाने में विल हैव टू डू वर्क, नो, वो अपने आप आ जाएगा। तो डेल्टा वी, इसका मतलब है सर ये लो नहीं है, ये हाई है, मैं जानता हूं, सो बट इन द फिगर, फ्रॉम फिगर वी सी दैट surface P is at high potential and surface Q is at low potential। ओ, इसका मतलब है ये डेल्टा V जो है ना, ये नेगेटिव है, अच्छी बात है, चलो। सो मॉड ई बार इज, अभी ये माइनस ऑफ डेल्टा V लिख दिया, तो कैन आई राइट दिस एज सिंपली minus of minus delta v, which is simply delta v by delta l, क्योंकि ये डेल्टा v नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेल्टा v बाय डेल्टा l। तो ये इक्वेशन हम, वैसे टेक्स्ट बुक में कोई न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें यूज करना है, बट इससे हमको एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चली, क्या पता चली, कि 2 पॉइंट्स, मेन पॉइंट, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट डिपेंड्स ऑन डेल्टा वी बाय डेल्टा एल। इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, इट इज डिपेंडिंग ऑन डेल्टा वी बाय डेल्टा एल, एंड एज अ रिजल्ट वो डेल्टा वी इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल, एंड चेंज इन पोटेंशियल जो है upon the distance traveled is delta V by delta L. So electric field
is in that direction where potential, do you agree, delta V delta L जितना छोटा होगा delta E उतना बड़ा होगा, potential decreases most, steepest rather, जितना delta V बड़ा उतना E बड़ा, so potential decreases steepest. And second, electric field, can you see it is delta V, change in potential over distance traveled, is the magnitude of electric field is equal to the change in the potential, magnitude of change in potential upon the distance traveled. So suppose potential change हुआ है 5 वोल्ट और distance है 1 सेंटीमीटर, तो what is electric field? 5 by 10 raised to minus 2, that is 500 Newton per coulomb. So this is the prime equation. Electric field is delta V by delta L, and ये रहे वो दो points. If you're going to look at those points, look at them. And इसके साथ एक आध सम करने की सोच रहा हूं मैं, एक आध सम देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी. I think it's an illustration, lovely illustration this. I think it's illustration number 2. Last time हमने illustration number 1 किया था, तो अब करेंगे illustration number 2. And दो charges है ऐसा कह रहे हैं. If you are looking at the NCERT textbook, तो NCERT textbook में illustration 2 ये कहता है there are two charges, 3 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb. So 3 into 10 raised to minus 8 coulomb and 2 into 10 raised to minus 8 coulomb. कितना distance है? 15 centimeter apart. You need to find the points where the net potential is 0. See, ये minus था, so ये plus है और ये minus है. Find the points where net electric potential is 0. मस्त समय एकदम. मैं Q1 को ओरिजिन रख के आगे बढ़ता हूं. तो ये रहे मेरे दो अनमोल रतन, ये Q1 जो ओरिजिन पे है और ये जो Q2 है वो A पे है. ये 15 सेंटीमीटर है. एंड एक काम करते हैं, सिंपल एक पॉइंट लेते हैं, यहां कहीं एक पॉइंट लेते हैं, आप चेक भी कर सकते हो. लेट अस से यहां कहीं एक पॉइंट है A, यहां से कितने डिस्टेंस पे है X, तो यहां से कितने डिस्टेंस होगा 15 minus X. So my first thing, first consider point A where net electric potential is 0. Okay. अब ये जो A है इस पे कितने चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा? दो, Q1 भी है और Q2 भी है. So V due to 1 plus V due to 2. V due to 1 is simple KQ1 by R1, V2 KQ2 by R2. भाई VA कितना है? 0 बोला है, K बाहर आ गया. Q1 कितना है? 3 into 10 raised to minus 8. And how far is point A from Q1? Isn't it X? Q2 is how much? Minus. भाई माइनस है तो माइनस लिखने का. 2 into 10 raised to minus 8 coulomb and what do you say? This 15 minus X. So K और 10 raised to minus 8 बाहर आ जाएगा and क्या बचेगा अंदर? डोंट वरी, ये बाहर आके कुछ कर नहीं पाएगा, ये 0 के नीचे चला जाएगा, राम राम हो जाएगा वहां पे. एंड बचा क्या? 3 by X minus 12 over. भाई ये इक्वेशन 7th स्टैंडर्ड के बच्चे अपने स्कूल की किताबों में सॉल्व करते हैं तो काफी. अरे 12 कैसे है भाई? 2 है, कहीं से भी 12 हो जाता है.
ये जब भी इधर से उधर ले जाते हैं ना, ये दिक्कत होती है, तो हमेशा ध्यान रखना। -3x + 2x 5x। ओ तो x = 9 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O। तो वाह सर वाह, बढ़िया। पर एक सेकेंड रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ सब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि एक ही पॉइंट पे जीरो होगा, पोटेंशियल है, स्केलर है, ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, एक और पॉइंट लेते हैं। लेट अस से यहाँ पे, लेट अस कॉल इट B, जो यहाँ से y के डिस्टेंस पे है, और ये तो 15 है, तुम जानते हो। सो कंसीडर अनदर पॉइंट B। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी सही होगा। अनदर पॉइंट B where net potential is 0। तो जैसा हमने इसके साथ किया, VB BV1 + V2 BKQ1/R1 + KQ2/R2, इसमें इतनी जान नहीं निकालेंगे। Q1 कितना है, 3 × 10⁻⁸, सीधा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। और R1 भाई B से Q1 का डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस लेना है 15 + y, एंड माइनस Q2 2 × 10⁻⁸, एंड माइनस Q2 से B का डिस्टेंस कितना है y। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, K और 10⁻⁸ को दफा करेंगे, -2/y साइड में आ जाते हैं। तो 2/y इज 3/15 + y। भाई कुछ मिस नहीं हुआ ना, तो अक्सर हो जाता है। 2/y इज 3/15 + y, एंड इधर का माल उधर, तो 30 + 2y इज 3y। 3y - 2y, तो y इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O। तो आपने देखा, दोनों राइट पड़े हमारे। सर ऐसा दूसरा सम हो तो कैसे करने का? भाई जो स्मॉल चार्ज वाला हो ना, उसके बाजू में दूसरा कंसीडर कर लेने, एक बीच में लेने का और दूसरा स्मॉल चार्ज वाला हो उसके साइड में लेने का। आपके होमवर्क के लिए आई थिंक इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल 1 2.1 फ्रॉम द NCERT टेक्स्ट बुक, ये इसी के जैसा है इलस्ट्रेशन 2.2 के जैसा। तो आप देखते देखते इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कोई दिक्कत पड़े तो मेरे को बुला लेना, एक आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल लुक एट पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ बड़े बड़े तीर मारेंगे। सो बी देयर, टिल दैट टाइम स्टे सेफ, हैप्पी सॉल्विंग, बाय।